Morning, everyone. Yeah. My sound is loud and clear. So now the objective for us, as Nandini has thankfully introduced myself, I am Akshay Gaud. Just to give you an overview, what I do exactly is that at Guidance Group, our objective is to try and shape you guys who are pretty much young, who are in your first year to degree year, final year in your college, to try and find what are the better opportunities for you in your own careers. These opportunities could be varied. Out of this, today we are discussing and focusing on banking examination. So I'm sure you guys are from various background. Okay, someone is doing a graduation from one field, someone is doing from another field, someone is from third field or anything else. But the central idea over here is to try and shape yourself towards a long-term career objective. So the early you begin, the better you are in a position, you are in a better position to get what you want as early as possible. Now, there is timing for everything, fair enough, but there is no timing to begin your preparation. For me, my experience is the moment you have contemplated and decided eventually that this is what maybe I'm trying to do, you have begin your preparation from that day itself. So any one of you is trying to do some research. What are these examinations? How are they conducted? How are we supposed to approach them? You have slowly and steadily started moving towards your goal. All right. So I have created a small PPT. That PPT just consists an overview. But what I want to have this particular session is more of an interaction, as the host has already told you guys. So if it is to and fro, it becomes much more easier for me also to solve more of your doubts. All right, because एक एक भाग हो जाता है कि I am giving you a plethora of information, and the other aspect is where you are probing me and trying to know more. So how much ever possible is from me, be it from technical knowledge or non-technical knowledge about the examination, I will see to it that I am giving you all the answers and satisfy all your queries. So let us just begin with that particular PPT, and then I will switch over to the whiteboard, and then we will discuss how things are to be taken ahead. Okay, just give me a moment. I'll share my screen. Yeah. Just give me a green signal that this is visible to you guys. Yes, sir. It's Yes, Okay, it's fair, visible. fair. So the objective over here is to try and find what your long-term goal is. All right. And this particular long-term goal is going to work in your own favor only. Why we try to do this? Why has your colleagues from your batchmates have conducted this particular seminar for you guys to help you guys to plan towards your long-term goal? So अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में आप लोग होंगे, द मोमेंट यू स्टार्ट प्लानिंग टुवर्ड्स इट यू आर सो यहाँ पर दो बैलेंसिंग एक्ट बन जाती है कि वन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज, उसकी जो पढ़ाई चल रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एम्बिशियस लॉन्ग टर्म गोल. ऑलराइट. सो ये चीज एक है कि हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके लिए जो टाइम टू टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिस कीप्स ऑन मूविंग अहेड बिकॉज उसका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है. You have to attend your lectures at a particular time, you have to attend your college at a particular time, you have your maybe internals examinations, maybe external examination. तो उसका एक शेड्यूल है. इसीलिए एज ए स्टूडेंट यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट पार्ट, यू आर ओनली वरीड अबाउट वन पार्ट विच इज व्हेन टू स्टडी. कि इंटरनल अब आया है, ऑलराइट, उसके लिए हमने मे बी 4 हफ्ते पहले पढ़ाई स्टार्ट की या 3 हफ्ते पहले पढ़ाई स्टार्ट की. ऑलराइट, कुछ सबमिशन आए हैं, फिर हमारी सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब आएगी, उसके में भी 2-4 हफ्ते पहले हमने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की. तो ये शेड्यूल ऑलवेज कॉलेजेस गिव यू एंड यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एट एवरी जंक्चर. वैसे ही similarly, what our objective or my objective is that you should try and plan in long term goals as well. वो हमेशा सेम टू सेम एग्जीक्यूटिव होगा इज नॉट, मतलब इज नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज रिक्वायर्ड so that you know what your checkpoints are in your career.
ओके, भले ही आज बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में जानने के बाद maybe after a few months maybe some of you guys decide maybe शायद MBA is a better option for me. Fair enough, nothing wrong in that, but the central idea is that you have researched very well, you have understood what are the pros and cons and how things work for you, and then you have made a conscious decision. इसके बाद आ जाता है कि you are executing on your decision. Okay, so ये overview दिमाग में रखो and try to absorb whatever I am trying to give you today, and whatever you want to know you can question me at the end as well. बीच में किसी को रोकना है also, please feel free, unmute your mic and please feel free to ask. So as we know, why banking industry has become more and more lucrative. The basic central idea is that if I am doing my graduation in any particular subject, all right, in any college, my central idea is कि मुझे job क्या मिल रहा है, what kind of job am I preparing to. So मैंने BMM कोर्स लिया या BMS कोर्स लिया या प्लेन BCom कोर्स लिया या कुछ भी लिया, my long term idea is, vision is कि where am I preparing myself to, in which industry for a long term basis am I looking myself for. तो वहां पर, so that I will spend my maybe 40-50 years of my career in that particular industry. So वो एक attractive passion उस field के लिए होना जरूरी है. Pervin, your mic is unmute. Can you just mute yourself? Pervin Dimelo, can you mute yourself, please? All right, we will just try and ignore. Try to focus on me, not get distracted by this. Fair enough. So that is the idea कि मैं किस direction में अपने आप को prepare कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कहाँ पर land up होंगी. There are other things. You choose a particular field because you are passionate about. कि किसी ने BMS लिया है तो maybe management studies की तरफ जाना है, किसी ने BAF लिया है तो maybe accounting and finance, किसी को लगता है कि maybe that is my future and that is where I will enjoy and flourish. किसी का plain BCom होगा, किसी का कुछ और होगा, ये है. वैसे ही similarly, any graduate candidate, all right, person from any graduate field is eligible to prepare for banking examinations. वही बात आ जाती है कि what kind of job am I looking for? Why? मेरा role क्या रहेगा? ठीक है, उस इंडस्ट्री में जाने के बाद what kind of a role will I play? Second, obviously important बात है कि how much will I earn? What is my return on investment? What will be my starting package? What will be my salary? Because that is one of the major impetuses. The research says us the major impetuses for us to be attracted to go ahead, wake up in the morning and work is this. सबको चाहिए, nothing wrong in that. ठीक है? And third is it keeps you occupied, right? कि how it drives you basically कि मुझे क्या क्या achieve करना है. I am sure you guys are very young, अभी 21 साल के भी नहीं हुए हो, सारी क्लैरिटी लाइफ की अभी नहीं है, but fair enough, you are trying to contemplate and decide where you are going to land. उसमें से yes, banking industry provides you all of these. Okay, major दो roles जो है banks के, वो है PO और clerk. I'll come to that, come back to this particular point in seconds, right? Don't worry. But yes, उसी हिसाब से अगर मैं एक लार्जर पिक्चर अपने आंखों के सामने बनाने की कोशिश करूं, तो large number of vacancies that we see, say maybe from last couple of years, and with the current data that suggests, where I'm sure you guys must be reading thoda sa newspaper, where government of India is trying to do bank mergers, okay, public sector banks, हाँ, उसमें mergers they are trying to do, जिसके वजह से the volume of jobs are highly likely to increase by year on year. इसीलिए these are good white collar jobs, diversified है, alright, white collar jobs है, and opportunities ज़्यादा है, correct? So the more number of graduates who can apply themselves for this particular positions or this particular institutional job, you have a brighter future.
यस, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी टाइप की जॉब की, ओके लेट मी ऐड दैट फोर्थ पॉइंट ऑन द लास्ट थॉट, कि दिस गिव्स अस ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एज वेल. प्लीज पार्डन माय हैंडराइटिंग. एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी देती है, वेदर इट इज ए गवर्नमेंट जॉब और इवन ए गवर्नमेंट बैंक के जॉब या फिर मे बी प्राइवेट बैंक्स के भी जॉब, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है विद ऑल दी पर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. We are focusing largely today on government jobs. Okay, government banks, public sector banks या PSUs भी कहते हैं, public sector undertakings भी कहा जाता है. All right. At this particular moment, after all the mergers etc., initially say maybe before 2016, there were around say 23 PSBs, public sector banks. अभी mergers वगैरह हो के there are around 18 public sector banks. All right. उसी के साथ मिलते हुए there are many scheduled cooperative banks, okay, and as well as private banks तो है ही है. Okay, तो scheduled cooperative banks यानी से मे बी शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत बैंक, थाने जनता सहकारी बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. All right. Yes, I'll go to my next slide. So these are the largely three positions where you can enter a banking industry. Okay. प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी क्या होता है कि इफ यू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर इन ए बैंक. कहीं पर भी कुछ डाउट आया प्लीज आस्क मी. तो पीओ होना, आई कम टू व्हाट आर द सब सेक्शंस ऑफ दीज, डोंट वरी, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बट दीज आर द लार्जली थ्री पोजीशंस दैट यू कैन एंटर इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री. एक होती है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन. देन द अदर वन इज क्लर्क. क्लर्क यानी क्या, इफ व्हेन यू एंटर अ बैंक, आई एम श्योर एवरीवन हैज एंटर्ड अ बैंक, ऑलराइट, एंड यू सी ऑल द ऑफिसर्स अराउंड यू, ऑल द बैंक ऑफिसर्स अराउंड यू, these are clerical positions. Okay, so you can enter that particular bank, or sorry, that industry as a job role at a clerical position. Then you rise among the hierarchy, or you enter at a probationary officer position, any assistant manager ki position, and then you rise in the hierarchy. The third one is the specialist officer position. अब ये specialist officer position क्या है? It is for special courses. तो से फॉर एग्जाम्पल आईटी हो गया, कोई अगर यहाँ पर कोई बच्चा शायद बीएससी आईटी वाला होगा तो वो आईटी वाले बच्चों के लिए हो गया. देन समवन हु हैज डन मे बी मार्केटिंग में एमबीए, बीएमएस गाइस इसमें होंगे. ऑलराइट, फिर लॉ. ओके, फिर और मैं एक और बता सकता हूँ, आईटी, मार्केटिंग, लॉ, या ये तीन मेजर ब्रैकेट्स हो गए. देयर आर सम मोर सब ब्रैकेट्स, लेकिन the caveat over here is that all these specialist officer positions are for based upon experience. Okay, so if you have worked in similar banking industry, IT में 2 साल 3 साल का criteria, you are eligible to apply. मार्केटिंग का तुमने मे बी एमबीए किया हुआ है या कुछ, या बीएमएस कंप्लीट करने के बाद मार्केटिंग जॉब रोल किया हुआ है, then you are eligible for it. से मे बी आपने लॉ किया हुआ है या मे बी ग्रेजुएशन के बाद लॉ करके फिर then you have practiced for a couple of years. Sorry, then you are experienced and eligible for it. But the largest number of vacancies out of these three are at clerical and PO level. Okay, specialist officer की number of vacancies कम आती है. To be surprising enough, maybe 10, 20, 15 ऐसे positions आते हैं. But for PO and clerical position में दोनों में वैकेंसीज आर मतलब एटलीस्ट 5,000 to 10,000 ऐसा वैकेंसीज आता है. ऑलराइट, एंड दिस इज एवर इंक्रीजिंग इन नंबर with the diversification of our population and 12th financial plan, 12th 5-year financial plan, which focuses on the slogan of 12th 5-year plan. उसमें financial plan में was inclusive development. Inclusive development. Inclusive development भानगढ़ क्या है? The central idea is over here that government of India will try and make banking industry reach out to the
lowest to the farthest of the corners of our country. So say for example you are in say Mumbai. It's not a great example out over here because it is pretty much saturated. But say Mumbai के पास में कोई गांव है, say थाने रूरल या विरार रूरल ऐसे एरिया है, राइट? एंड वहां पर भी बैंकिंग इंडस्ट्री पहुंचनी चाहिए बिकॉज इट हैज इट्स पर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अभी तक भी ऐसा था या until 12th 5-year plan came up into the picture, the data suggested that banking industry has not went deep into the industry or so sorry Indian population. And वहां पर उनको inclusion में लाने के लिए they decided कि we will try and open up more branches. तो branches बढ़ गए, vacancies बढ़ गई, तो अलग अलग लेवल पर आ गई. तो इसीलिए you have ever increasing amount of vacancies in both the probationary officer level and clerical level. Okay, ऐसे. अब यहां पर क्यों जाए, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पर बताया कि रोल क्या होगा, ये अभी के स्लाइड पर बताया. व्हाई मनी, इट इज ए ड्राइविंग फैक्टर, फेयर इनफ. एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इफ यू जॉइन, ऑलराइट, देन योर सैलरी is anything more than 70K per month to 1.2 1,20,000 per month. All right. So minimum salary you start with is this, and maximum that you can go to is 1.2 lakh per month. यहाँ पर this is SBI which gives you that particular amount, but the other banks, other government banks give you this as your starting amount. लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर में कैवियट है, 2 साल का प्रोबेशन होता है. आफ्टर दैट यू गेट दिस सैलरी इन योर हैंड. ऑलराइट. क्लेरिकल जॉब अगर मैं करता हूँ, ऑलराइट, तो माय स्टार्टिंग सैलरी इज एनीवेयर बिटवीन 45 to 60 per month. Okay. Why? Abhi you all of you guys when you give this examination will be 21 years. Yani final year appearing candidate is eligible to give this exam. At that time, you will be 21 or maximum 22 years of age. To start your career at this salary or at this salary is the best possible case scenario. तो ये जो मैंने पिछले साइड पर बताया कि रोल तुम्हारा हो गया और ये 2 important driving factor है. Okay, you will love your job. Why? Because you get both these things satisfactorily what you want to shape your career in. Getting my point? Next. So अब I'll just go through the overview. ये पिछले slide पर everyone is comfortable, no? You can just message me yes chat में and I can move ahead. If anyone has any issues, please stop me and ask. Chat में बस y डाल दो. I'll go ahead. Okay, I've got enough yes. All right. Thank you guys. So I'll move on to the next slide. Yeah. So अब ये कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए, right, our central idea will be what? Okay, first कि मैंने उसके previous year question paper observe किए कि नहीं. Second will be मैंने उसका syllabus observe किया या नहीं. तीसरा will be उसका मेरा pattern मैंने observe किया कि नहीं. When I do an analysis of these 3 things, I as a candidate, if I'm putting myself into your shoes, I will be able to create my roadmap. Now, why this roadmap is necessary? Okay, your roadmap to balance yourself out. समझो ये मेरे timeline बनाई है, and whichever year you are in your college, अभी first year, second year, third year, उस हिसाब से you can create a roadmap thinking कि okay, मैं अगर first year में हूँ, तो मुझे अभी first year में क्या-क्या करना है, second year में जाने के बाद क्या करना है, थर्ड ईयर में जाने के बाद क्या करना है. अगर मैं थर्ड ईयर में हूं तो when I am balancing my final year of college, along with that मुझे क्या करना है ताकि when I complete my college, okay, I should be in best possible position to give these examination. All right. So ये roadmap is very important. When will that come? Every candidate should do this particular analysis. क्योंकि उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा किस पैटर्न में, किस सेक्शन में हाउ मच एम आई सपोज टू स्कोर. ऑलराइट, व्हाट इज द एग्जैक्ट टॉपिक
where I am confident right now, and maybe I'll need some sort of assistance from my seniors or my colleagues or from someone like me कि मुझे एक हेल्प की जरूरत है, मे बी ये वाला टॉपिक मेरे लिए थोड़ी सी मेरी स्ट्रेंथ वीक होगी. मेरा लैंग्वेज इज गुड, माय रीजनिंग इज गुड, बट मे बी मैथ्स क्वांट सेक्शन में थोड़ा सा आई एम स्ट्रगलिंग. तो ये एनालिसिस जब आप करोगे यू विल अंडरस्टैंड. मे बी कोई कैंडिडेट होगा उनके लिए मे बी क्वांट्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, लैंग्वेज थोड़ा सा वीक है, रीजनिंग एवरेज है. So they will be able to understand, okay, what are the things that I'm supposed to work on, कहाँ पर मैं स्कोर कर सकूं. Alright, तो ये प्लानिंग, ये रोड मैप कब बनेगा? When you do this analysis. Alright, तो सिलेबस में अगर मैं डिटेल में जाऊँ, आई विल शेयर विद यू गाइस द डिटेल सिलेबस, डोंट वरी. मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, और एल्स आई विल शेयर विद वन ऑफ योर कॉलीग्स एंड दे कैन शेयर इट विद यू एज वेल. नो इश्यूज. की मैथ्स अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेमैन टर्म्स में ये मैथमेटिक्स है. उसमें क्या आता है? ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स. ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Yeah, so sorry. All these examinations are MCQ based examinations. तो मुझे वो देखना बहुत ही जरूरी है. मैथ्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एंड अगर मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन दे ही रहा हूं तो मार्केटिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑलराइट, अब वो बात की बात है. वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन आंसर्स यू कैन आस्क मी, नो इशू. These are the things which are common. उसमें से भी सबसे ज्यादा कॉमन है ये पहले तीन चीजें. This is nothing but layman's terms. May we call it as aptitude. Even if in your college कोई कैंपस आता है या कुछ आता है और वो कैंपस आपको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया देती है, that is nothing but this aptitude test. और वो एप्टीट्यूड टेस्ट, वो इसके कंपैरिजन में द लेवल ऑफ दैट एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑब्वियसली लो. ऑलराइट, बट सेम एप्टीट्यूड का ही सिलेबस इज ओवर देयर, इज इन दीज एग्जामिनेशंस एज वेल एज से मे बी योर एमबीए एंट्रेंस या एनीथिंग. ओके, सो ये तीन टॉपिक जो है, मैथ्स, लैंग्वेज, रीजनिंग, आर योर हार्ट रूट ऑफ एवरीथिंग दैट यू विल डू इन योर करियर. ये तीन टॉपिक्स आपको अच्छे आने ही है. इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ, दीज आर नथिंग दैट देयर इज सम कॉन्सेप्ट ओवर हियर. कॉन्सेप्ट्स एक लेवल तक था. ओके, 10th लेवल तक ही यहाँ का सिलेबस है, बट अब हमें इस पर स्पीड लाना है. वी आर सपोज्ड टू मास्टर आवर स्पीड ओवर इट. ऑलराइट, फेयर. सो ये एप्टीट्यूड सेक्शन है. इफ यू प्रैक्टिस दिस, वी कैन मास्टर इट एंड वी कैन गिव दिस एग्जामिनेशन स्मार्टली एंड क्लियर इट. कोई लोड नहीं लेना है, आराम से, बिंदास, सिंपल. ओके, आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द पैटर्न एग्जैक्टली ओवर हियर? ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है. 3 लेवल में बेसिकली एग्जाम होती है. प्रीलिम्स, वेयर दिस इज द डिवीजन दैट आई हैव शोड यू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. कि क्वांट्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 35 मार्क्स, 35, ड्यूरेशन 20 मिनट. देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर गिवन ए फुल 1 hour and you could switch into sections. लेकिन अब भी roughly say 2018 से they have made a change in the pattern where they say that every section will have a dedicated amount of time and उसका sequence भी fixed है. So you will solve your quants यानी maths पहले, reasonings बाद में, English तीसरा. So quants मतलब क्या? तो आपका जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, time, speed, distance, profit and loss, all right, time and work are the topics. Some of the examples I am giving. लेकिन some of you guys might fear कि अरे ये time, speed, distance स्कूल की झंझट वापस आ गई. नहीं नहीं, it is very simple. Don't worry. Any Tom, Dick and Harry can crack this exam. Don't take stress. इसका level school level ही है. Now you are in graduate. तुमको ये आएगा ही आएगा. You have to put your heart and mind into it. Alright. Reasoning में अगर मैं example दूँ तो आपको क्या आता है? For example, say direction sense. Direction sense maybe say I am sitting to the north of this particular computer. Then which direction are you guys sitting with respect to me? यानी मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मैं ये कंप्यूटर के नॉर्थ में बैठा हूं, तो ये कंप्यूटर चलो मेरे रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है?
obviously south, direction sense. All right, blood relation. So I am X is the son of Y and Y is the grandfather of Z. What is the relation between Z and X? एक simple layman example मैं बता रहा हूँ. And English language is very much simple, where you have grammar and comprehension, etc., etc. Now, the challenge in these examinations, the trick in this examination is this, that you have to have qualify basically sectional cutoff. यानी हर एक सेक्शन की आपको मिनिमम कट ऑफ लानी ही है. Okay, so say for example, if we analyze last 5 years of question papers and last 5 years of results, okay, तो वो कट ऑफ क्या आई है? So maybe quantitative aptitude मैथ्स की कट ऑफ आई है out of 35 questions or 35 marks. The cutoff has varied between say 7 marks to say 15 marks. तो कभी कट ऑफ सिर्फ 7 मार्क आई है, तो कभी कट ऑफ सिर्फ 15 मार्क आई है. बेसिक रीजनिंग का भी एवरेज अगर इफ आई ट्राई टू सी 9 to 12 है. लैंग्वेज का एवरेज आई हैव one of the years I saw, say maybe 2016 if I'm not wrong, the cutoff for language was 4 marks. All right, minimum cutoff to qualify in that particular section was 4 marks. And then obviously it varied, उसके बाद भी बढ़ते गया. It went around say 12 या 14 के आसपास. It hovered around. Fair enough, but there are say maybe surprises. 4 marks भी कभी cut off आया था. Fair enough. Point is, first you have to qualify all the sections individually, and then आपको overall cut off भी लानी है. यानी 100 में से overall cut off भी लानी है. तो मतलब क्या, अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस अगर वापस करूं, तो ऑन एन एवरेज ओवरऑल कट ऑफ हैज हवर्ड बिटवीन 55 to 62 मार्क्स. मतलब इस रेंज में इट हैज केप्ट ऑन मूविंग ऑन. तो कभी 55 आया, कभी 58 आया, कभी 62 आया, कभी 63 आया, XYZ. इस रेंज में इट केप्ट ऑन मूविंग. सो इफ यू गेट से मे बी यहाँ पर से उस साल कट ऑफ था 5 मार्क, आपने 6 मार्क लाया. इधर भी 5-5-5 सेक्शनल कट ऑफ था, यू स्कोर 6-6-6. यानी हर सेक्शन में यू हैव क्वालिफाइड. लेकिन आपका टोटल इज व्हाट, 6 3 इज 18. लेकिन ओवरऑल कट ऑफ वाज व्हाट, 55. विल यू गो फॉर मेंस सेकंड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन? ऑलराइट, आप क्वालिफाई आगे नहीं करोगे. यू हैव टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन. समझो मैथ्स में आपने 35 आउट ऑफ 35 लेके आए, राइट. रीजनिंग में भी आपने 35 आउट ऑफ 35 लेकर आए, 70 हो गए. और भी प्लीज पर्सनली कॉल हिम और हर एंड प्लीज चेक इट आउट. तो थर्ड से में भी, लेकिन लैंग्वेज में आपने सिर्फ 2 मार्क लेकर आए. तो यहाँ पर 70 आप आ गए. ओवरऑल कट ऑफ भी आपने मिला लिया, लेकिन will you qualify for mains? Probably not. Okay, just hang on a second. Someone sent a chat. Yeah, Nandini, if you know that particular individual, you have to call them. He's pretty in a good mood today. Good night. So, लेकिन इस सेकंड इधर इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही मार्क आए, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. यानी सेक्शन आपने क्वालिफाई नहीं किया, यू विल नॉट गो फॉर सेकेंड लेवल और मेंस एग्जामिनेशन. ऑलराइट, आई होप एवरीवन वाज एबल टू हियर मी. आई होप ये डिस्टरबेंस किसी को इशू नहीं हुआ. इफ यू वांट आई कैन रिपीट माइसेल्फ. Yeah, repeat. Can you repeat? Yeah, I'll do that. Give me a moment. एक सेकंड ना, एक ही सेकंड है ना. Let me do one thing. Let me put up a whiteboard and उस पर ज्यादा और मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा. Yeah. You can see this whiteboard? Yes. Okay, good. Thank you for confirming that. So देखो क्या होता है कि you have 3 levels of this examination. Prelims जो हमने अभी देखी वो, मेंस एंड फिर इंटरव्यू. अब किसी एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव इंटरव्यू एज वेल. वो कहाँ आएगा, आई टेल यू, डोंट वरी. So prelims में you have to give a paper where you have 3 sections: maths, quantitative aptitude, logical reasoning, and फिर test of English language.
तीन सेक्शंस आएंगे यहाँ पर. यू हैव 35 मार्क्स या 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चन. टोटल हो गया 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. ओके, नाउ यू हैव टू क्वालिफाई योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जो पॉइंट मैं ऐड कर रहा था इन डिटेल, द पॉइंट वाज दैट यू हैव टू क्वालिफाई योर सेक्शनल कट ऑफ्स एज वेल. वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको हर एक सेक्शन में लाना है. फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल कट ऑफ है ये प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए से 60 मार्क्स. ऑलराइट, यू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 ओवर हियर, 35 आउट ऑफ 35 ओवर हियर. तुम्हारा टोटल स्कोर 70 भी आ गया, लेकिन इधर लैंग्वेज में तुमने सिर्फ 2 मार्क में गिनाया. एंड इसका मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ और से मे बी 10 मार्क्स. ओके, सो यू हैव क्वालिफाइड योर ओवरऑल कट ऑफ, but you have not qualified your language cutoff. इसलिए you will not be selected for next round. So minimum marks you have to score every year section, as well as you have to qualify your overall cutoff. All right, Diana, you have got it? Yes, yes. Sure. So once you qualify this particular section, all right, या preliminary examination. अब ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है? इन जनरल द क्राइटेरिया इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ वैकेंसीज. स्टिल इन जनरल प्रीलिम से मेंस तक जाने के लिए द वॉल्यूम इज एटलीस्ट से मे बी 100 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स. तो से मे बी या सॉरी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट. तो मतलब क्या हो गया? 10 वैकेंसी अज्यूम करते हैं. ऑलराइट, तो प्रीलिम्स में समझो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन वैकेंसी है 10 सीट्स है. तो प्री से मेंस में जाने के लिए ओनली 100 स्टूडेंट्स विल बी टेकन अहेड. सो 100th बच्चे का जो स्कोर रहेगा टोटल से मे बी 10 मार्क है उसका स्कोर, दैट विल बी योर कट ऑफ. एंड उसके नीचे के बच्चे विल बी आउट, उसके ऊपर के बच्चे विल बी इन. दे विल गो फॉर मेंस. ऑलराइट, यहां तक क्लियर? ओके, मेंस में यू हैव ऑल दीज 3 सेक्शंस रिपीटिंग. ओके, प्लस जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये 2 टॉपिक्स बढ़ जाते हैं. जहां पर इनका वेटेज इज सिमिलर. आई गिव यू शो यू दैट स्लाइड, डोंट वरी. लेकिन टोटल समेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क. टाइम विल बी 90 मिनट्स. आई एम सो सॉरी, प्री का मैं बताना भूल गया. यहां पर टाइम विल बी 60 मिनट्स, 1 आवर टाइम. ओके, मेंस में 90 मिनट्स आपके पास है. ओके, ये चेंज है. अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन क्या आता है? This is basically your day-to-day reading of newspaper. All right. So financial awareness भी हो सकती है यहाँ पर. For example, I am assuming you guys have gone through today morning's newspaper. Okay. Can anyone tell me what is the hot news currently going on? Anyone of you can just unmute yourself and tell me. Ukraine-Russia war. Exactly, Hussein. यूक्रेन-रशिया वॉर. लेकिन अगर मैं तुम्हें वापस एक थोड़ा सा फोकस सवाल पूछूं कि उसमें से फॉर एग्जांपल फाइनेंस रिलेटेड कुछ तो एक नई डेवलपमेंट हुई है. कैन यू पुट सम लाइट ऑन दैट? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? Economic sanction, right? इकोनॉमिक सैंक्शंस, एग्जैक्टली. उसमें एक और टर्म अभी आया है, एंड आई विल कम टू इट. चलो, स्विफ्ट. All right. I am so sorry, I forgot the full form of this particular terminology today. I read it. I was reading today morning's newspaper. What EU, European Union, and Germany, along with other bigger countries in the world, has decided to do is they are supposed to freeze SWIFT transactions of Russia. जैसे हुसैन करेक्टली हाईलाइटेड कि इकोनॉमिक सैंक्शंस डाले गए हैं, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर फॉर रशिया टू बैक आउट इज वेयर यूरोपियन यूनियन एंड अदर alliances have decided
to put swift sanctions, swift economic sanctions on Russia. What are they basically? That swift account आपके पास अगर रहा, तो then and only then you can make international transaction. International transactions. यानी क्या? So say for example, let me put it again, give you a one minute. I will just go on a different tangent for 1 minute. Bear with me. Russia largely is fighting this particular war based on their financial resources that they generate from oil and natural gas. So more than 80% of their financial resources come from selling of oil and natural gas. And Europe is their largest buyer. They are financing their own war because they are one of the largest holders of international funds. उसको ये कहते हैं, just give me a moment, ऊपर है मेरे, foreign exchange, international largest resources of foreign exchange, to the account of what today's newspaper says is $630 billion. This is a huge amount, all right, for a country whose population is not more than say maybe 20 crores. Okay, उतना मतलब अभी तो हमारा सिर्फ महाराष्ट्र का शायद पॉपुलेशन होगा, just cross check it up, मैं बस ऐसे ही कह, maybe very less comparatively to India. $630 billion का foreign exchange है, because of which they are able to finance their war efforts. अभी वो कैसे आ रहा है? By selling it, and all these international transactions with respect to oil or natural gases or any gold reserves, etc., minerals also comes via your banking industries having this SWIFT authority. This was developed by Belgium, which is a member of European Union, and this is particular the feature that they use. जैसे हम इंडिया में या देश में इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए जीपे यूज करते हैं, IMPS यूज करते हैं, NEFT यूज कर सकते हैं, वैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यू नीड दिस. सो बाय पुटिंग सैंक्शंस ऑन दिस, ऑलराइट, रशिया का नेशनल बैंक जो है इज ऑन फ्रीज मोड. तो जैसे हमारा समझो आरबीआई को फ्रीज कर दिया, our economy will go in doldrums. Similarly, रशिया का भी जो नेशनल बैंक है उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ये स्विफ्ट ने उन्होंने होल्ड कर दिया. जितने भी रशियन ओलिगार्क्स है उनके बैंक्स को इन्होंने फ्रीज कर दिया बाय डूइंग दिस, ऑलराइट, और होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मोड, and hence they will able to hold Putin from financing this particular war. So ये ठीक है, this is that particular overview that I gave you. Okay, so अब एग्जाम में मुझे जनरल अवेयरनेस में क्या आ सकता है? What is this full form of this particular SWIFT? रशिया विषय नहीं पूछते बैठेगा, बट मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ, दैट इज माय रोल टू अंडरस्टैंड. तो मे बी कोई पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस SWIFT, और मे बी क्वेश्चन आ जाएगा व्हिच वन ऑफ दीस फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मे बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, NEFT, IBPS, XYZ, तो ये एक ऑप्शन होगा. राइट, मे बी इसी से रिलेटेड अलग कुछ सवाल आ जाएगा, कुछ घुमाकर सवाल आ जाएगा. उस हिसाब से when you read your newspapers daily, you keep on extracting such news. I have thousands of students every day asking me कि सर ये अभी करंट अफेयर्स में ये तारीख से ये तारीख तक पढ़ूं क्या, या मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या मुझे कुछ रेडीमेड नोट्स है क्या. My answer to them is very simple: no. It is a daily process, daily exercise. जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरा काम करता हूँ, पढ़ता हूँ XYZ, वैसे ही यहाँ पर भी एक डेली प्रोसेस है. यू हैव टू रीड योर न्यूज़पेपर्स डेली, एक्सट्रैक्ट योर इंफॉर्मेशन, कीप ऑन रजिस्टरिंग इट इन योर माइंड, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट. कंप्यूटर नॉलेज इज प्रीटी सिंपल, बेसिक होता है वो. हाउ आर यू, मतलब व्हाट आर द शॉर्टकट्स फॉर पावर पॉइंट, व्हाट आर द शॉर्टकट्स फॉर एक्सेल, XYZ. ओके, once you qualify your main, similarly sectional cutoff वगैरह वगैरह जो मैंने आपके प्री के लिए I explained you, वैसे ही then you go for your interview round, and this interview will be for 100 marks. Okay, you qualify this particular interview round. यहाँ पर कोई qualification criteria नहीं होता है, जैसे यहाँ पर प्री का और मेंस का मैंने आपको बताया. Then eventually mains and interview का score is taken in a ratio of 80:20. Based upon this, you will get eventually a rank, and your rank will determine which particular bank you will get. मतलब क्या कि कैप राउंड का फॉर्म यू गाइस मस्ट हैव पुट
आफ्टर योर 10th या 12th आपने कैप राउंड का फॉर्म भरा होगा, आफ्टर योर स्कोर यू गेट, योर रैंक यू गेट, एंड उसमें से यू वर अलॉटेड दिस पर्टिकुलर कॉलेज, यू गॉट एडमिशन इनटू योर कॉलेज SIES कॉलेज, वो कैप राउंड के प्रोसेस के बाद, दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन योर इवेंचुअल स्कोर इन योर 10th या 12th, और उसमें जो रैंक आया, महाराष्ट्र रैंक, मुंबई रैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्राइटेरियाज, एंड देन यू गॉट योर एडमिशन। वैसे ही ये तुम्हारा फाइनल स्कोर आएगा, स्कोर के ऊपर आपका रैंक डिटरमाइन करेगा, एंड दैट विल बी डिटरमाइनिंग व्हिच बैंक यू गेट। यानी एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू विल फिल योर बैंक्स नेम। से फॉर एग्जांपल मेरा पहला चॉइस था मे बी कैनरा बैंक, सेकंड चॉइस था मे बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड चॉइस था मे बी बैंक ऑफ इंडिया, XYZ, ऐसे मैंने 18 बैंक्स का प्रेफरेंस डाल दिया। ऑलराइट, से मेरा रैंक आया 10, मेरे 9 के 9 जन ने आगे के कैनरा बैंक डाला, और कैनरा में भी 9 वैकेंसीज थी। ऑलराइट, एंड वो 9 वैकेंसीज खत्म होने के बाद मुझे कैनरा नहीं मिला, तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, दैट आई गॉट। ऑलराइट, यहाँ तक एवरीवन इज क्लियर? आई विल गो बैक टू द PPT. Just give me a yes in the chat and I'll move on. Everyone is clear यहाँ तक? चैट में किसी ने कुछ पूछा था, सोसाइटी फॉर, या दीपाली गिव मी ए फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। या थैंक यू दीपाली, थैंक यू वेरी मच, यू आर राइट, यू आर राइट। आई वाज गोइंग टू शेयर यू समथिंग इन इट। हाँ, अरे यार, not this. Yeah, I was. Okay, negative marking, yes, this important aspect, negative marking is available, 0.25 marks. 0.25 marks यानी 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन का मार्क जाएगा। इट्स सिंपल, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ट्राई करो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वेरीज, जो मैंने आपको अभी व्हाइट स्क्रीन पर बताया। ओके, यहाँ पर ये सेक्शंस है, ये पैटर्न है मेंस में, जैसे आई शोड यू ऑन दैट व्हाइट स्क्रीन। देखो यहाँ पर आई एम जस्ट रिपीटिंग, रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज। लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओवर हियर सो दैट इट इज क्लियर फॉर यू। हां, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्किंग स्कीम, जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर, 50 40 40 50 20, total questions are 20 200, total marks are 200, and time allotted is 90 minutes. All right, similarly 0.25 marks यहाँ पर होंगे, and you will go ahead to the next round interview. Okay, yes. अब वो last point जो मैंने initially आपको बताया था, yeah, someone is saying something? Sir, Nandini here. Yeah, go ahead. Sir, you are the host, so you have the access to mute the participants. So could you please mute Bovin DeMello? Yeah, I'll do that. Yeah, I have muted him, I guess. Yeah, हो गया शायद. Okay. Thank you, Yes, thank you, yes, Nandini. yeah. Thank you. Brain fade हो गया मेरा. Sorry. Yeah, where was I? हाँ, interview now. Sir, can I ask one question? Yeah, sure, Hussein. Go ahead. Sir, actually, I am preparing for MBA competitive exam, and it has a same syllabus which you explained in the bank exam. Correct. So, sir, if I want to give this exam, I have to prepare something else, or it will work if I give after the competitive exam only. Like, is there any difference, or all the things work? Yeah. Obviously, see, हर एक एग्जाम का अपना अपना एक ईगो है. Okay, and they try to maintain their independent identity. So as you said कि तो you are preparing for your MBA entrances as well. तो उसका एक nature of questions है, यानी difficulty level है. तो maybe quants का difficulty level 1 हो गया. CAT, if I am not wrong, you are preparing for CAT, Hussein? Yes, sir. CAT and CET. So CAT and Maharashtra CET. Fair enough. So अभी Maharashtra CET का nature क्या है? There is no negative marking. वो टाइम पास एग्जाम है, सब लोग पास होते हैं. ऑलराइट, लेकिन अगर मैं कैट में आ गया, तो कैट में मेरा डिफिकल्टी लेवल डिफर करेगा. क्वांट का एक डिफिकल्टी लेवल है, रीजनिंग का एक है, लैंग्वेज का एक है. वैसा ही IBPS का भी जितना भी एग्जामिनेशन है, यानी ये बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जामिनेशन है, उसका डिफिकल्टी लेवल अपनी तरफ है. जैसे कि फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन द मोर चैलेंजिंग एस्पेक्ट आई वुड से इज रीजनिंग रादर देन क्वांट्स, क्योंकि रीजनिंग इज मोर टाइम कंज्यूमिंग if you can twist your questions nicely.
तो इसीलिए से मे बी फॉर लास्ट 7 years का अगर मैं एक एनालिसिस करने की कोशिश करूं, द ट्रिकियर पार्ट हैज बीन रीजनिंग, ओके, रादर देन मैथ्स. तो हर एक एग्जामिनेशन का अपना अपना एक नेचर है. अगर मैं एक लार्जर पिक्चर पर एक जूम आउट करके देखूं, ऑलराइट, एंड आई ट्राई टू सी द टॉपिक्स कि यहाँ पर भी क्वांट्स है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, वैसे यहाँ पर भी क्वांट्स है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ब्ला 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 है. यस, यहाँ पर भी सेम है. यस, लेकिन व्हेन आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन का नेचर में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मैं एनालिसिस करूं तो आई विल अंडरस्टैंड इसके लिए अप्रोच क्या है. इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करूं तो इसके लिए अप्रोच क्या है. तो whenever you are giving that particular examination, तो कैट दे रहे हो तो उसके टाइप के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे, बैंकिंग दे रहे हो तो उसके टाइप की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे. व्हाई? यू हैव टू गेट इनटू दैट जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, फेयर इनफ, लेकिन अभी टूर्नामेंट है T20 का, तो मेरे को अगर मैं टेस्ट प्लेयर अच्छा है और मैं T20 में भी टेस्ट जैसे खेलते बैठू, फॉर्मेट तो सेम ही है ना, सब कुछ सेम है, क्रिकेट ही इन एसेंस है, फॉर्मेट में सॉरी डिफरेंसेस है. T20 लेकिन खेलना है, आई नीड पावर हिटिंग, मेरे को बॉलिंग में स्मार्टनेस वगैरह वगैरह. टेस्ट में मुझे खेलना है तो टाइम कंज्यूमिंग, उधर रगड़ना है, XYZ, पेशेंस रखने हैं, ये है. तो एसेंस क्रिकेट ही है, लेकिन खेलने की स्ट्रैटेजी फर्क है. तो यहाँ पर भी इन दिस केस ये एसेंस यही है, एप्टीट्यूड, क्वांट्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, लेकिन उसकी प्लेइंग की फील्ड अलग है, इसकी प्लेइंग फील्ड अलग है. Okay, so when you are preparing for this format, prepare in that way. If you are preparing for this format, prepare in that way. All right, have I answered you satisfactorily, Hussein? Yes, sir, I got it. Like, sir, first I should give a mock and analyze data, which part is tougher and which is different, right? Exactly. So previous year question paper is easily available online. Just download it and go through them. उसके बाद you can solve maybe mock test and see where you are yourself in that picture. Okay, and you can maybe analyze उसके बाद. और एक mock test देकर नहीं होगा, give at least 3 to 4 mock tests हर एक सेक्शन का. Okay, इधर का उधर का सब जगह का 3 से 4 mock test दो. That will give you a clearer picture. एक analysis अच्छा मिलेगा. All right. Okay, sir. Sir, like my exact question is that like you tell me that in logical reasoning or in points there is time and distance, then in logical reasoning there is direction. So this whole thing is there in CET. तो उसके अलावा भी मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो CET में ना हो और बैंकिंग में हो? Oh, financial awareness एक टॉपिक नहीं है. ऑलराइट, सो वो निटिग्रिटीज है. यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. इसलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया ना कि विचएवर एग्जाम यू आर फोकसिंग, सिलेबस का एनालिसिस जरूरी है, पैटर्न का एनालिसिस जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूरी है. इफ यू डोंट डू दिस एनालिसिस, ये तीनों चीजों का, तो कोई फायदा ही नहीं है. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. Chat में I have a question. I'm just going to that question. I don't know. Kimaya has asked a question, which is the best time to start preparing for exams and which subject to take first. Kimaya, you have to begin right now. ऐसा कोई बेस्ट और वर्स्ट टाइम नहीं है. अभी डिसाइड किया ना, start from now. Which subject? You just pick up a subject that you want and start practicing. तो चाहे वो क्वांट्स हो या रीजनिंग हो या लैंग्वेज हो. व्हाट विल हैपन इज कि मैं ये 3 एनालिसिस करने के बाद, और सेम मे भी तुमने रीजनिंग लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश की, ऑलराइट, व्हाट विल हैपन इज यू विल अंडरस्टैंड वेदर यू नीड हेल्प फॉर इट, या मे बी हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया, मस्त है, मुझे अभी इसमें मास्टर करना है, यानी मुझे स्पीड मिलाना. तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि हाँ आई एम अवेयर अबाउट इट, आई कैन डू इट. मे बी ऐसा होगा कि लैंग्वेज सेक्शन आया एंड यू थॉट कि मे बी आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस वन एंड आई नीड सम असिस्टेंस. तो मे बी कोई सीनियर से पूछ लिया, या कोई कॉलेज वाले से पूछ लिया, या मे बी समवन लाइक मी मुझसे पूछ लिया कि अच्छा ये वाले टॉपिक के लिए आई नीड असिस्टेंस एंड गाइड मी फॉर दिस. तो वो हो सकता है. लेकिन ये एनालिसिस एवरीवन, जैसे हुसैन ने भी अभी पूछा, एवरीवन शुड डू दैट. ऑलराइट, फाइन किमाया. And when to prepare मैं end में आ जाता हूँ. Okay, I will come back to that particular question. Roshan has asked which website we fill the form for exam. Roshan, I'll come to that particular question in end. Nicholas Kolur, which newspaper should we prefer for banking exam? Nicholas, I prefer largely Indian Express because it is more lucid.
and simple in understanding. There is a good newspaper, The Hindu. I'll just write it out over here. द हिंदू करके एक अच्छा न्यूज़पेपर है, लेकिन उसका लैंग्वेज बहुत ही चैलेंजिंग है. फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग आई डोंट थिंक सो यू शुड डेल्व इनटू इट. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस इज मच मोर सिंपल. अच्छा आर्टिकल्स आता भी है, कभी कभी अच्छे चैलेंजिंग आर्टिकल्स आते हैं विच टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट. लेकिन ओवरऑल the language is pretty simple and anyone can grasp it as early as possible. But हर एक के घर में अपनी अपनी एक चॉइस होती है. Someone who reads in their native language, कोई मराठी में पढ़ता होगा, कोई हिंदी में पढ़ता होगा, कोई गुजराती में पढ़ता होगा, no problem, पढ़ो. Important है वो information आना. Alright, okay. मैं ये complete करता हूँ, then I'll come back to white screen and we'll go ahead with some more details. Okay. So now all the interview, so sorry, only for IBPS clerical examination there is no interview, but for PO, IBPS PO, okay, you have your interview. तो जैसे मैंने कहा कि बैंक की एग्जामिनेशन 3 लेवल पर होती है, PO, क्लर्क एंड ये SO, स्पेशलिस्ट ऑफिसर. तो PO एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यू हैव इंटरव्यू, क्लरिकल पोजीशंस के लिए यू डू नॉट हैव इंटरव्यू. तो मतलब क्या हो जाता है, मेंस जो मैंने यहां पर बताया, मेंस का जो फाइनल स्कोर है, बेस्ड अपॉन दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड यू गेट योर बैंक ऑफ योर चॉइस. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. आई वांटेड टू हाईलाइट ए पॉइंट ओवर हियर. वेयर वाज आई? हाँ, सो ये पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट होने के लिए इट टेक्स 8 months. मतलब क्या? तो से फॉर एग्जांपल प्रीलिम आया. Okay, every year prelims on an average comes in the month of say August या तो September. So say for example someone who is eligible अभी इस year 2022 में 2022 में, then you will be giving your prelims in August or September 2022. Then your mains will follow somewhere around या तो November या October 2022, and your interview eventually will be in February 2023. इसका मतलब you begin your examination, your target is 2022. उसका ये एग्जामिनेशन पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए it takes around 8 months. So जैसे कि for every strategy, जो मैंने वापस coming back to my root question, all right, yeah, my first interaction that I had with you was roadmap. So say for example anyone is targeting to give this examination in 2022 August, इसका मतलब उसके roughly एक साल पहले you should begin your preparation. So you should have begun your preparation in 2021. Someone who is going to be eligible in 2023 or 2024, they should begin your preparation accordingly. All right. Next slide पर मैं जा रहा हूँ. So अब इसी हिसाब से यही पैटर्न पर और क्या-क्या है, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री में व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज व्हिच वी कैन सिलेक्ट. आईबीपीएस का फुल फॉर्म जैसे एकदम लेमैन्स में अगर मैं कहूं तो इट इज नथिंग बट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल्स एंड सिलेक्शन. द आइडिया इज दिस इज जस्ट एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी. एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सो सॉरी, which all these public sector banks have given the authority to conduct exams for them and give the final result. अब यही IBPS जो बॉडी है, ये आपके गवर्नमेंट बैंक्स के लिए करती है, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए करती है, एसएससी के लिए करती है, नाबार्ड के लिए करती है, आरबीआई के लिए करती है. इन सब के लिए दे कंडक्ट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड इन सब का सिलेबस इज मोर और लेस सिमिलर. यही एप्टीट्यूड पर बेस्ड है. What are these different opportunities? So probationary officer, clerk, specialist officer, I have told you. The other examination is SBI. वो भी 2 लेवल पर सिलेक्शन करती है, PO, क्लर्क. RBI ग्रेड भी हो गया, RBI असिस्टेंट हो गया. NABARD is for agricultural banks. I am sure you guys know this. Regional rural banks and cooperative banks, and yes, for some private banks also it conducts examination. इसी के चलते even that IBPS conducts examinations for Staff Selection Commission SSC as well. We can conduct a different seminar for this, or I'll just give you an overview of this as well. Don't worry.
एक second, someone has put up a message in chat. Grade B means, oh yes, good question, good question. Okay, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में यू गेट सिलेक्टेड फॉर 3 लेवल्स, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया एंड फिर एसओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया. वैसे ही व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू से आरबीआई टेक्स यू एट 2 लेवल, मतलब उसका भी आपको इंडक्शन का लेवल ट्राइंगल है. से फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कहां पर आप एंटर करते हो. तो आरबीआई की अपनी एक हायरार्की है. यू एंटर एट ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बी एंड सी लेवल पर, डी एंड सी लेवल पर दे आर नॉट टेकिंग यू, दे टेक यू एट ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. ग्रेड ए आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो असिस्टेंट. ग्रेड बी यानी इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर पीओ, यानी असिस्टेंट मैनेजर. यहां पर असिस्टेंट यानी आप समझ लो से क्लर्क, इक्विवेलेंट टू ए क्लर्क. प्लीज पार्डन माय हैंडराइटिंग. एंड यहां पर बी में इक्विवेलेंट टू ए असिस्टेंट मैनेजर. ऑलराइट, सो 2 लेवल पर आरबीआई में एंट्री होती है, ग्रेड बी एंड असिस्टेंट. वैसे ही इन नाबार्ड एज वेल योर एंट्री इज एट ग्रेड बी एंड असिस्टेंट. सिमिलर यहां पर भी है क्लर्क एंड दिस इज असिस्टेंट मैनेजर. ऑलराइट, हैव आई आंसर्ड यू? Was that आकांक्षा? या अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं आई कम टू योर क्वेश्चन इन द एंड. ऑलराइट, पहले ये सब कुछ समझा दूं एंड आई कम बैक टू योर क्वेश्चन इन द एंड. ओके, यहां तक ठीक है? एवरीवन इज क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. Yeah. So now my idea, this is the pattern that you have understood what you're supposed to do. जैसे starting में I was just giving you an introduction that you have to set your long-term goals. You are in whichever year in your college, first, second, third, you have to set your long-term goal. And with that, you have to basically be dedicated towards it, motivated towards it, plan towards it, and then execute towards it. Okay? Motivation क्यों ढूंढना है? Whether I want to work into that particular environment or not, whether I am dedicated towards working or not. Okay, then I can plan to it. जो मैंने बताया about your syllabus, paper pattern, etc. blah blah blah, and then execute over it. जैसे अभी 2-4 जनों ने कहा, हुसैन ने कहा, किमया ने कहा that they have actually started preparing towards that particular examination. That execution is important from the word go. All right, you plan towards it and start executing it. Ups and downs चालू रहेगा, ये नहीं आ रहा है, this is working, that is not working, that will keep on going on, but this execution will give you that confidence to reach that particular level. All right, और भी similar aptitude के level पर what are the different examination that you can give? Insurance industry, okay, assistant officer, business development officer, okay, specialist officer and clerk. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें भी AO एंड DO, ये 2 पोजीशंस आ गया. जनरल इंश्योरेंस, NIC, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल अश्योरेंस, XYZ, ये सारी भी एग्जामिनेशंस है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन बैंकिंग एग्जामिनेशन IBPS का, ऑलराइट, PO को फोकस करके यू आर प्रिपेयरिंग इसी के साथ एटलीस्ट bare minimum 20 different positions, 20 different organizations. All right, and every organization similarly, जैसे motivating factor क्या है मेरा, whether I will have a decent pay, whether I will, what kind of a role will I play, manager का role play करूँगा, clerk का role play करूँगा, what role will I play. Every of these, each and one of these organizations, all right, has different roles for you and you will enjoy yourself in that role. The point is you have to just give an examination, okay, जो conduct की जाएगी by IBPS. All right, there are something थोड़ा सा आगे जाके भी, then you have railways,
Intelligence Bureau, SEBI, IRDA, BARC, Indian Postal Services, BHEL. This is basically again public sector undertakings. Okay, Indian Postal Services, BHEL, GAIL, SAIL, etc., etc. यहाँ पर भी you have your clerical positions. यहाँ पर भी you have your assistant managerial positions, and यहाँ पर you can prepare. So again, in one academic year, which begins from say after your April टू से मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है, सिमिलरली आपका एकेडमिक ईयर भी जाता है. ओके, यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस एज वेल. चैट में एक और सवाल आया है, दिस इज ज्वाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस. नीतीश, आई विल जस्ट टेल यू इन द एंड. ओके, डोंट वरी. कहा था मैं? हाँ, सो दीज ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो ओके रिक्रूट यू एंड यू आर एलिजिबल. ओके, यस. तो अभी क्वेश्चंस पे जस्ट जाने के पहले मुझे एक चीज बस हाईलाइट करनी है ताकि सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गॉट उसको मैं बता दूं. दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इज क्लियर ना? आई जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर, क्लियर दिस पर्टिकुलर. Now the first question by someone is that when to begin your preparations. Okay, तो इसमें हमारा पॉइंट आ जाता है कि what is the eligibility to prepare for the, to appear for this examination. Any graduate from any field and someone who is minimum 20 years of age, okay, or has completed 21 years of age. यानी क्या 20 years of age? क्यों? क्योंकि you will be in your final year. Okay, so any graduate, वो BA हो, BCom हो, BSc हो, या distance education में graduation BSc nursing किया हो, anyone, any graduate is eligible to appear for these examinations. Second point, age criteria जो मैंने बताया आपको, minimum 20 years of age. Why? Final year appearing candidate is eligible for to appear for this exam. Now, why final year का criteria आता है? क्योंकि someone who might be in your third year, final year in your college, they will have their final semester in the month of say April. Okay, मुंबई यूनिवर्सिटी के पब्लिक है SIES वाले, तो रफली अप्रैल में आपकी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आएगी. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, योर प्रीलिम्स कम समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. सो रफली अगस्त या सितंबर तक योर फाइनल रिजल्ट्स आल्सो कम, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का वगैरह रिजल्ट भी आ जाता है. सो इसका फॉर्म आता है रफली इन द मंथ ऑफ जून. सो यू हैव कंप्लीटेड, फाइनल सेमेस्टर हो गया, रिजल्ट नहीं आया, इसलिए यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ ए कंप्लीट ग्रेजुएट, बट यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट, यू आर एलिजिबल. ओके, फाइनल सेमेस्टर हो गया, यू कैन फिल अप दिस फॉर्म इन दैट मंथ ऑफ जून, गिव दिस एग्जाम. जब तक इंटरव्यू राउंड आता है, विच आई टोल्ड यू फरवरी में आएगा. सो 2022 का कोई बच्चा होगा, देयर इंटरव्यू विल बी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023. बाय दैट टाइम यू विल हैव योर the final degree वगैरह, all the documents in your hand, so you are eligible. Okay, so eligibility क्या है? Any graduate from any field, BA, BSc, BCom वगैरह, कुछ भी करो, BAF करो, BMS करो, कुछ भी करो, anything, you are eligible. Age criteria भी आपको बताया. Maximum, ये minimum हो गया, maximum age is 28 years for general category, and then relaxations in age for other reserve category 5 years वगैरह वगैरह वगैरह. All right. Number of attempts, every year you can give this examination for until the age of 28. So 28 complete हो गया आपका, तो then you are not eligible. But since you are in college and we are preparing, जैसे your batchmates have arranged this particular seminar to make you aware as early as possible. I've seen many students coming as late as say 26, 27, and they have worked for a particular amount of years in private industry, and they are desperate now to get a government job. All right, why? They are fed up of whatever they are doing, and now they are coming back. तो उस वक्त लेट हो जाता है. You have lost your touch of your studying, एक academic acumen या academic momentum, you have lost it, and then coming back to it becomes very much difficult and to do that. So once this opportunity that you have got to get that awareness during your college years is the best opportunity, क्योंकि you have your academic momentum with you. तो college के लिए भी पढ़ रहे हो,
वो दिमाग में भी वही है कि पढ़ाई है, ये कॉलेज का भी ये टाइम टेबल है, तो वही मोमेंटम आपके साथ है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल. ऑलराइट, यस. Let me finish this eligibility criteria and then I'll take the final questions end में. Okay. मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ क्या? एज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, एंड या दैट्स इट. ये दो ही क्राइटेरियाज है फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर दीज एग्जामिनेशन. ओके, यस, फाइन. सो एनी क्वेश्चंस? अभी वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस. दिस इज द इंफॉर्मेशन. अभी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह एनी क्वेश्चंस होगा तो आई हाईलाइट इट, नो इश्यूज. ओके, चैट में आई गो. यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं. ऊपर से आई कम. निकोलस का पहला क्वेश्चन था, विच न्यूज़पेपर गॉट इट? I guess I have answered that. Nicholas, if you have got the answer, just say yes or you can unmute yourself. हाँ, किसी को टाइपिंग के लिए बोर हो रहा होगा, you can unmute yourself and ask me questions. हाँ, बिंदास. So yes, sir, my doubts are clear. Okay, good, great. फिर किसी ने पूछा है ग्रेड बी मीन्स, हाँ उसका आंसर आई हैव गिवन. किमया ने पूछा था एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग क्वांट्स बट माय डाउट इज हाउ टू स्टडी क्वांट्स. I feel it is a bit hard and for me then LR and language. Okay. See, ये एग्जामिनेशन का एक सिंपल सा क्रक्स है. किमया, आई एम गिविंग दिस, एड्रेसिंग दिस टू एवरीवन because this is a similar issue with everyone. Over the many years this has been the problem. अब ये एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करते हैं? ओके, ये क्वेश्चन के साथ वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर दिस आइडिया. ओके, हाँ, दिस एग्जामिनेशन इज टाइम डिपेंडेंट. कि आपको 60 मिनट्स दिया गया है और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए हैं. यानी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग और हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग विद इन दैट एग्जामिनेशन. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट यार? Speed. Okay, so the entire focus of this examination is to develop some amount of speed along with accuracy. Getting my point? अब ये accuracy और speed लाने का तरीका क्या है? ये accuracy और speed लाने का तरीका एक ही है, which is practice and practice and practice. कोई जादू का छड़ी नहीं है. There is no magic wand which I do this and you will have your answer. Right? ये speed develop करने के लिए practice. Someone like me also, who is teaching in a classroom and teaching you different topics, econs पढ़ाया, reasoning पढ़ाया, language पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, ठीक है, fair enough. Okay? लेकिन उसके बाद क्या? पढ़ा तो दिया. You as a candidate who are giving this examination need to do this. ये जब तक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं. कितना भी सरपट को कोई पास नहीं होगा. प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए. इफ यू आर बिकमिंग माय स्टूडेंट और तुम्हारा कॉलेज का भी कोई भी टीचर तुमको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और तुमने उसको जाके वापस प्रैक्टिस नहीं किया, इवन दैट टीचर विल से कुछ नहीं होगा तुमसे, क्योंकि तुम पढ़ के ही नहीं आया, क्या सवाल पूछते हैं. तो ये प्रैक्टिस, वो एफर्ट जरूरी है. वो पिछला स्लाइड मैंने बताया था ना, वो क्या डेडिकेशन, गोल वगैरह वगैरह, ये प्रैक्टिस वहीं पर दिखाई देगी. इफ यू शो योर प्रैक्टिस, ये दिखाई देगा. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अरे एक सेकेंड ना, लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड, इस पर ज्यादा अच्छा आ रहा है. सो व्हाई दैट प्रैक्टिस? अब ये प्रैक्टिस कैसे होगी? वापस ओके, ये प्रैक्टिस बॉस चाहिए डेली. ओके, डेली होगी तो ही आउटपुट आएगा. You are preparing for this examination for what? You are attending this seminar today for what? To get some output ना रे. ऐसा ही टाइम पास करने के लिए मे बी इनिशियली देयर वर अराउंड लाइक 70, अभी 50 लोग हैं, 55 लोग हैं. वो 10-12 लोग मे बी नेटवर्क की वजह से गए होंगे या वो पक गए. दिस इज नॉट देयर गोल. ठीक है ना? You are still surviving in this particular seminar for what? You are looking for some output for yourself. I gave you some information. लेकिन अभी उस पर बैठ के what you are going to do will matter. एंड ये आउटपुट लाना है तो बॉस ये डेली चाहिए, और ये डेली चाहिए तो ही आएगा.
अब ये डेली आधा घंटा करो, or you do it for 1 hour, or you do it for 2 hours, or you do it for 10 hours. Doesn't matter. But this has to be daily. To achieve something, you need your consistency. And that is the key. All right. Fair enough. So अब किमया का सवाल था कि मेरा मैथ्स का क्या हो गया या उसमें क्या हो गया. Boss, you have to analyze this very nicely कि exactly which sections am I struggling with. So as you asked me किमया about quants, all right, रीजनिंग ठीक ठाक हो रहा है, तुमने कहा लैंग्वेज भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अभी क्वांट्स में, देन यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट डू यू नीड सम असिस्टेंस. तुम बैचमेट से पूछो ये पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प चाहिए, या मुझसे पूछो, व्हाटएवर, एनीथिंग यू डू, बट यू नीड टू सी एनालाइज वेयर यू आर स्टक. डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में अटक गए हैं या स्पीड नहीं आ पा रहे हैं. ओके, इफ देयर इज कॉन्सेप्चुअल इशू, देन यू हैव टू गो बैक एंड find that solution कि किस बुक में है. I am giving you this ऐसा सिंपल सा एनालिसिस में कि इसका सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि the difficulty level will be up to standard 12. ओके, अपना नेशनल बोर्ड एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 12. तो जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़ेगा ना यार, they are going to crack this examination. Simple. वो चाहिए बैंकिंग दो और भी कोई एसएससी दो या यूपीएससी दो, सब कुछ दो दुनिया का, एमपीएससी दो, यू हैव टू स्टडी योर स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड का टेक्स्ट बुक्स यू हैव टू डू. सो यू आर स्ट्रगलिंग कि मैं जस्ट ट्राई टू पिक अप दैट एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम दैट बुक. आई एम श्योर यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट यू आर यूज्ड टू एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नहीं हुआ, यू कैन टेक माय नंबर एंड कॉल मी. You have your batchmates, उससे मेरा नंबर लेकर you can call me, no problem. Okay, next सवाल पर मैं जा रहा हूँ कि मैं have I answered yourself? You can unmute yourself and ask me. Tell me कि तुमको आंसर मिल गया करके. Alright, ठीक है. Next question क्या था? नीतीश का था. Is it necessary to join classes or online? Again, this is a very subjective question, Nitish. Alright. ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा कि जो एनालिसिस है अबाउट योर क्वेश्चन पेपर, पैटर्न एंड सिलेबस, व्हेन यू गो थ्रू इट यू विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर. तो तुमको समझेगा वेदर यू नीड सम असिस्टेंस और नॉट. एंड देन इफ यू थिंक यू नीड सम क्लासेस फॉर हेल्प, ठीक है ले लो. इफ यू थिंक कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, go ahead, as long as you are doing this consistently. Need help, you take that, seek that. जैसे अभी आज ये सेशन हो रहा है, why to get some sense of awareness about it. You came here, you are extracting some output of it. All right, Nitish, unmute करके भी yes no कर लो. Okay, मैंने भी हाँ कहा. Next question क्या था? Siddhi ने पूछा what is the fees. Siddhi, if you guys want to know about how I do that, you can take my number from your colleagues over here and you can give me a call anytime. Or if I'm not able to pick up your call as I'm in multiple sessions like these throughout the day, just drop me a WhatsApp message and I will be able to get back to you. Janet has asked me which books to prepare for banking exams. Janet, my simple answer is previous year question paper का एक must bank लगाया हुआ है. People has unmuted themselves. Who is that? Previous year question papers का एक must है book किरण publication का. You can pick up that book and do this analysis by yourself. लेकिन again I will highlight, do this analysis online. सब question paper available है, सब कुछ है. नहीं मिला तो you can go to guidance group का website also. All right. My guidance group website is guidancegroup.co.in. Okay, you can go to that particular website also and download these particular things. If you are unable to find these question papers and pattern on website, drop me a WhatsApp message. I will share it with you guys. Don't worry. Okay. Yeah. Kiran publication. हाँ, ये to answer your question, Kiran publication. Next question क्या है? नेक्स्ट जैनेट के बाद क्या था? कुश पलान का डस प्योर रिक्वायर एक्सपीरियंस. नहीं कुश, ऑल द फ्रेशर्स, तुम ग्रेजुएट वाला बताया ना मैंने, एज 20 से लेके 21
sorry 20 से लेके 28 तक का, all the freshers are eligible to apply for this examination. Okay, so experience की जरूरत नहीं, experience is only required for क्या नाम है उसका, specialist officer. Let me just give me a second. Let me mute this participant first. कौन है ये? Hey विघ्नेश भाई, mute करो. Yeah. So Kush, you need to, any fresher is eligible for PO as well as clerk. सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. All right, you can unmute yourself and say yes, no issue. Yes, sir. हाँ, अमय ने पूछा does IBPS place you in all other banks? All other banks मतलब Amay, I did not understand your question. If you can unmute yourself, you can ask me again. Amay, are you still there? So I mean, go ahead, go ahead. so I mean, like SBI PO places you in just SBI, right? So Correct. yeah, so other than the government banks, where does IBPS place you? That's what my question was. Okay, ठीक है. Okay. See, IBPS है ना, is just an examination conducting body. इसलिए वो नाम लिखा है ना, Institute of Banking Personnel and Selection. So जितना भी गवर्नमेंट बैंक्स है उसका PO लेवल एंड क्लर्क लेवल पे वो एग्जाम कंडक्ट करती है. But out of all the government banks in India, at least, okay, SBI treats itself as an independent royalty because it itself is the largest bank in the world in terms of the personnel that it employs and in terms of the number of branches that it has within India and even outside India. So SBI has branches in many countries outside India, South Africa, Australia, USA, England, यूरोप में और बहुत सारी जगह. तो इट इज ए ह्यूज बैंक, इसलिए उसका एग्जामिनेशन एक इंडिपेंडेंट होता है. ओके, एंड बाकी का जो गवर्नमेंट बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल बैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो रफली 18 बैंक्स है उनका एक साथ होता है. अब उसके अलावा भी और कोई कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है IBPS, तो वो जो पीपीटी पे मैंने लिस्ट दी थी वो है. ओके, Amar, you have got what you wanted? Yes, sir. Okay, ठीक. चैट में एक और क्वेश्चन आया है, क्या है? किमया ने पूछा है, सर कैन यू क्रिएट एनी व्हाट्सएप ग्रुप दैट विल गो इजी टू क्वेश्चन यू. किमया, you can WhatsApp me personally. I'll give you reply as and when possible. Don't worry. Okay. To create an entire WhatsApp group for you guys will be a challenging aspect. You can message me. I will reply you. If you want to meet me, my office is in Dadar only, nearby. So ज़्यादा दूर नहीं है. I can give you my the batchmates of yours who has conducted this seminar. They can tell you about me. No issues. उनके पास से मेरा नंबर ले सकते हो. No problem. और if they do not oppose, I can share my number. Next question विमला का है. कहाँ पर है? एक सेकंड ना. Let me go through the next question. Can we do MCOM? विमला का सवाल क्या था? इधर गया. So sorry. हाँ, विमला क्वेश्चंस का सवाल है, कैन वी डू MCOM as well as prepare for banking examination assignment? Yes, Vimla, you can. Since you are eligible after in your final year, and say maybe you are aspiring to do more, ऐसे maybe masters करके भी अपना एक बैकअप बना रही हो, you are completely fine with that, no problem. Point is कि MCOM की भी अपनी एक पढ़ाई है, alright, and these examinations also has their own preparation. What you are supposed to do is create a balance with it. Okay, so masters का भी पढ़ रहे हो, उसका balance create करो along with your banking examination preparations. On technical front, that will be a challenge for you. You have to prepare, study for this, you have to study for this as well. If you can manage both these things, believe. All right, Vimla? Okay, thank you. Shraddha has asked me, approximate preparation period required for exam, is it 1 year or less than 1 year? This is a very subjective question, yaar. For me, the idea is you have to begin. First year में भी आ गए हो, चालू करो. Third year में भी हो तो चालू करो. I am just sensing this कि all of you guys are of final year, क्या? Anyone can just give me an idea. First year, sir. First year वाले हो ना? हाँ, ठीक है, no issue. So
even abhi 1 year as such, the idea is for me, for any competitive examinations you are giving, वो ये बैंकिंग हो, कैट भी, कुछ भी दुनियादारी हो, मेरा टारगेट है कि व्हेन दैट एग्जामिनेशन कम्स, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, से मे बी इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट से ऑगस्ट, एनालाइज द सिलेबस एंड डेवलप योर स्पीड. In an ideal scenario for me is that you should at least begin from your first year of your college. या फिर if you have missed it, the idea is the moment you have decided to give this examination, to begin for this examination. अभी कोई graduation हो गया and they are working for maybe a year or two वगैरह, and they fill up the form कि अभी advertisement आई है, I am filling this form and अभी मुझे help चाहिए, अभी मैं preparation चालू करेगा. In an ideal case, you get maybe say 40 days का window from the date of closing date of filling up your form to the date of the examination. Okay, that is an ideal case. हाँ, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है because say for example ये COVID हो गया, आगे पीछे हो गया, कुछ XYZ. So maybe ideal है. This 40 days का window is never enough for you to prepare this for this examination. Okay, for those candidates I will say maybe अभी तुमने decide किया कि तुम prepare कर रहे हो, you have to give yourself at least 1 full year, okay, to begin to at least appear for this examination. 1 full year चाहिए. Someone who is already completed their graduation and maybe 1-2 साल job कर रहे हो, XYZ. In an ideal world, what my hope with guidance group, etc., what I try and do is begin early, settle down early with your jobs and your career. So abhi first year say you are contemplating, okay, what will happen is you will be in a best possible position. So say maybe मैंने अभी first year में तीनों topics की practice की, उसकी speed अच्छी मिला ली, second year में भी मिला ली, मैं final year में जब हूँ, my stress of maybe clearing this final year and this examination is less because my confidence level has boosted myself to go up, and वो momentum जो मैं develop कर रहा हूँ to prepare for that examination goes high, and you can clear these exams very easily. जैसे I told you कि there are around 18 to 20 different examinations which you can give in one financial year, one academic calendar year, sorry. इसका मतलब when you prepare for yourself for 2 full years, final year complete करके अगर मैं एक और साल पकड़ूं तो 3 पूरा साल, you are in best possible frame of mind, best possible physical structure to sit for these examinations and crack them. So 18 से 20 अलग-अलग examinations आप knock कर रहे हो एक साल में. My larger idea is कि कोई एक तो आप open करोगे अपने लिए दरवाजा. Correct? Yes. जैसे कि I'll give you an example of one of my recent students. She became an SBI PO, but for a year when she was practicing for this particular examination, she was not able to clear her final interview. Okay, and for a year before that she cleared, her final score was less by 0.025 marks. यानी PO बनने से वो रह गई 0.025 marks. She called me, she cried, ऐसा कैसा मेरे साथ ही injustice, 0.025 marks मतलब क्या, blah 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 blah, fair enough. She cried for that 2 days, हो गया. But on third day she realized, all right, कि नहीं, when I reached at this level, I understand that I have it in me. Okay, because I had done all my practices correctly, my preparation correctly, and maybe a 0.25 marks, 0.25 marks मतलब कोई एक क्वेश्चन गलती हो गया था, ठीक है, वो मे बी उस दिन का मेरा कंपोजर शायद I must have lost it. She again prepared for this examination, or she prepared for 1 full year, and eventually in that very next attempt she became a PO in SBI. Okay, so कहना ये चाह रहा हूँ, the point I am trying to make is ये चालू रहेगा. यहाँ का गेम बहुत बड़ा है. You have to be preparing yourself mentally. Since most of you guys are in your first year, you're training yourself nicely, smoothly, slowly towards your ultimate goal. तो वो ये है ना, मस्त उस composure के लिए बनते जा रहा है. Okay, she began her preparation. The example मैंने बताया, you can check her Shobha Maru करके.
She began her preparation 4 years after her graduation. So that was very tricky for her to get into that momentum. You guys are in first year या second year college में हो. You are in best possible position to begin your preparation and execute yourself. All right. और कोई सवाल है क्या? I'll just open chat again. What is the time? Okay, ठीक है. किधर है? Next सवाल was Kimaya. Do you take online classes? I do take online lectures. Yes, Kimaya, I do take online lectures. Akanksha, so if you do any other professional exams like CS and want to join banks for that position, so we need to give IBPS exam separately. Yes, Akanksha, you have to give IBPS examination separately. Siddhi ने पूछा है, Akanksha, you have got your answer? Unmute करके बोल दो. Akanksha. Okay. Siddhi ने पूछा है, what is a 2-year probation period for PO after clearing the exams and interviews? Okay. Hussein, एक second, let me answer Siddhi and then I'll come back to you. Okay. What is the 2-year probation period for PO after clearing the exams and interviews? Yeah. Siddhi, after clearing your interview, all right, final interview, when you get selected, say for example, ये SBI में ही तुम selection हो गया, okay? से जून से तुम्हारा start हो गया तुम्हारा काम. So वो जून से लेके आगे 2 साल का जून तक you are on 2 साल you are on probation. You will be put into different departments of that particular bank. Say maybe exchange department, foreign exchange department में भेज दिया, say maybe finance department में भेज दिया, say maybe insurance department में भेज दिया, say maybe loan department. You work at all the different departments within that bank. You get that 2-year का experience, understand everything, and then you are given your deputation. यानी किस ब्रांच में you are going to work. Say if you are in Mumbai, मुंबई में किस ब्रांच में? चर्चगेट में करोगे काम या मे बी बोरीवली में काम करोगे, wherever, whatever your destination choice will be, वहां पर you will be posted to that particular branch. All right. Did you get your answer, Siddhi? Unmute yourself and say, good. Hussein, go ahead. Next is you. What is your question? Sir, any graduate can give this exam, right? Exactly, correct. तो सर अगर if there is engineer or some from science department, so they don't have any finance knowledge, so how will they, like it is a banking job, so how will they able to do all the work? BA वालों को भी तो banking knowledge नहीं है ना, then Hussein, even they are eligible to do this examination. Yeah, sir. So मतलब let me put it this way, Hussein. Let me put it this way. Even if you are from that field, what is your graduation subject, Hussein? Just tell me. BMS marketing. BMS. So you are into marketing, right? So how are you very much sure about accounting and finance? Are you good with accounts? Can you say? Yes. Like I am from commerce background. तो क्या हो गया? Someone who is doing BAF वो बोलेगा कि यार नहीं Hussein कुछ भी गड़बड़ कर रहा है. मेरा accounting and finance है, मैं ज़्यादा better and I am more qualified to get in bank. तुम नहीं है. तो will it be fine? The central idea is, let me put it this way, कि these are all government jobs and you need to give a level playing field. Okay? किसी भी job role में जब आप जाते हो, उसमें पहुंचने के बाद ये जो probation जो दिया गया है 2 साल का या 1 साल का, whatever, that helps you to understand everything very nicely. इसलिए even many engineers also apply for this examination. I have a doctor student of mine who has also applied for this examination and has cleared. Okay, cleared. Dentist थी वो student, चल नहीं पा रही थी practice. She prepared for this examination, cleared, and is now secured with her job. Clerical position पे, but she is happy with it. कुछ तो है हाथ में. So the idea is everyone can appear for this examination. All right. So BA हो, BAF हो, BMS हो, BSc हो, engineer हो या doctor हो या कोई भी हो. Getting my point? Yes. किसी ने और चैट में सवाल पूछा था. Vandana is asking me, can you give website? Vandana, which registration are you asking for? Unmute करके बोल दो. Vandana, what kind of registration are you asking for? Or if you want, you can chat. मतलब chat में message डालो.
I didn't understand your question. Which registration are you asking for? IBPS का registration or registration with me? What exactly are you asking for? Or a registration for your seminar? क्या पूछ रहे हो? Okay, ठीक है. If you are asking for IBPS, IBPS का website है ibps.in, ibps.in. मेरा वेबसाइट अगर आपको देखना है तो गाइडेंस ग्रुप GUIDANCE.GROUP.co.in. तो www लगाने का आगे वो दैट आई एम श्योर यू विल नो. ऑलराइट, अब मेरे को कॉल करना है तो यू कैन टेक माय नंबर इफ यू वांट. If I'm allowed, I guess Nandini will decide whether I'm allowed to give my number or not. You can tell that. Richard is asking, can you tell about your coaching class? Richard, this is a seminar for college. I cannot tell you largely about my coaching class. You can take my number, call me or WhatsApp me. I will give you that information. Kush is asking, is there different exam if I want to join RBI? And if yes, you can share the website for eligibility. Okay. कुछ RBI का भी एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंटली होती है, जैसे मैंने SBI की कही. एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय IBPS itself, बट RBI का भी पैटर्न इज सेम जो अभी पिछले 1 घंटे से वी आर डिस्कसिंग, मोर देन एन आवर वी आर डिस्कसिंग क्वांट्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड. मेंस में जाओगे तो डिफरेंस आएगा, विच इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में, उस पर एक डिफरेंस आएगा. मतलब लेट मी शेयर दैट स्लाइड अगेन विथ यू तो ज्यादा क्लियर समझेगा. किधर गया ये मेंस वाला स्लाइड? हाँ, यहाँ पर आपको यार यहाँ पर वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट से किधर गया, जनरल अवेयरनेस है. तो जनरल अवेयरनेस में you will have one more section. Yeah, ज़्यादातर questions will be on finances and financial awareness in RBI. तो अगेन उसका जो nitty-gritty एक पैटर्न में डिफरेंस जो है या सिलेबस में जो डिफरेंस है वो ये है. You should go through it and it will give you a better picture. All right, Kush. Yes, sir. Thank you. Yeah. Anyone else with any question? Please feel free to ask. Anyone? All right, ठीक है. So if you guys want to get in touch with me, am I allowed, Nandini? Hello, sir. We have actually shared your number on the group itself. Okay. So students can refer from there. Okay, fair enough. Do you need me to share you this particular PPT to share with everyone? I can do that. Yes. Okay. You can share it with us. We'll forward it on the group. Done. And I will also share you the entire syllabus of IBPS examinations as well. Okay. किसी और Yes. को anyone has any questions before I go? All right. So Nandini has shared my number. If not, you can just write it down again. It's 99207 36752. Or you can find it on my website also. Guidance. Okay. So the entire idea of conducting this particular session is for you to begin your preparation as early as possible. Final year में हो यानी अभी तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर आ रहा है, वो अच्छे तरह से देखो, प्लान करो उसके लिए. एंड लॉन्ग टर्म गोल जो एग्जामिनेशन आ रहा है इन बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी प्लान करो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. ऑलराइट, it has been a good time with you all. If you guys have been patient enough, I took almost a 2-hour session with you guys. No issues. Thank you for this opportunity. Nandini, if you want to close it, you can go ahead. Yes, You have any closing words? Go ahead. Yes. I would like to propose a vote of thanks on behalf of the DISHA team of SIES College of Commerce and Economics. Thank you so much, Guidance Group, for conducting this successful seminar. We had a wonderful time. And I'm pretty sure students will have a lot of clarity after this. And if they have any doubts, they can reach us directly to you, or they can ask us and we can ask you. And at the outset, I would like to thank you for your time. It was a wonderful experience indeed, personally as well.
A special thanks to all the organizing committee and the students for making this session a interactive one. We needed that today. So yes, that's it. Thank you so much. Thank This you. is Thank you. It was Nandini my Parashar pleasure to be signing off. associated with you guys. Yes, sir. It was a wonderful experience. Thank you. Thank you. Good day. Good day. Thank you, sir. Bye. 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 Thank you. Thank you, sir.